ऊपर है, हम्म, तो एक वो चल रहा है, अच्छा प्रयास करके ऑर्गेनाइजेशन है। प्रयास का अच्छा they are very good institution. True. Sangeeta, I बहुत think ही you have to mute yourself. वहां पर ले म्यूट हो गए हाँ ठीक है so I think Sangeeta has already talked to you but Sangeeta it's not mute कहाँ पर है आपका नहीं आपका ये कहाँ पर that's not mute this is mute mic को mute करना पड़ता है देखो हाँ what we are trying to do, Sangeeta has already talked to you regarding a project, right? On ESG. I was thinking that let us take it forward, that we can develop a project and send it to NABARD on SHG basically, like, sorry, on ESG, that how to maybe there are, I was exploring a bit. We have already seen that couple of this what do you call like assessment formats are already there, right? right, ESG right. assessment format. Is it like you can tell us, guide us also? Is it like specific or like it is very regular ones what we get in the websites? Okay. So the point is there is no ESG assessment guiding notes. The only thing which is there available on internet is the indicators or the KPIs which are available. Right. You are right. You are Now, right. Yes. yeah. The second thing is that because GRI was one of the organization who started it, so they have the maximum number of users of their KPIs given by them. Now there is, so if when we talk about the US and UK, so there are like two complete opposite frameworks. Now, but those all these frameworks are dependent upon the SDG framework. So whether we are directly picking up and choosing indicators from the SDG main 17 goals and their sub indicators and sub goals, or we take help of GRI goals, the answer will remain the same. Now the problem is that there is, because there is no standard format and there are so many formats. So Like you were telling that this so in US and UK they're using this your SDG no, indicators. no, No, अच्छा. I'm saying सबसे पहले सर शुरू हुआ MDG, उसके बाद SDG. Right. SDG में 17 goals and their sub goals, बिल्कुल and agree. there are Yes. KPIs related with these sub indicators. Correct. Hmm. Now what companies did? Now GRI was one of the first companies who came out with their KPIs. The key performance indicator for each thematic and sub-thematic areas will be this. Now there is a tussle between the organizations which are based in US and which are based in UK. Now Okay. UK organizations actually follow a rule which is related with the EU taxonomy, and it is called SFDR. SFDR में भी if we get into the detail कि SFDR का वो part which actually aligns with the financial institution, there is Article 8 and Article 9. So there are two articles which are Article 8 and Article 9, which associates sustainability with the financial institution. जब हम बात करते हैं यूएस की, यूएस goes with IFRS, और IFRS के साथ साथ चलता है TCDF. TCDF is more of environmental sustainability. उसके अंदर ही फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी अंदर लेकर के आते हैं. तो मतलब जो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, इफ यू अंडरस्टैंड अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में और फाइनेंस में देयर इज अ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. विद इन दैट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड डबल मटेरियलिटी. तो डबल मटेरियलिटी में वन इज फाइनेंशियल एंड द अदर वन इज सोशल. सारे के सारे फ्रेमवर्क्स उठे वहीं से हुए हैं सर, कहीं कुछ देयर इज नो चेंज इन दैट. But UK wala is more upon the financial and social sustainability, whereas US wala is more on climate and financial sustainability. ये थोड़ा सा एक fine difference है.
Now the problem with Indian institution is, now as soon as it all started with BRSR. उससे पहले वो BRR था. With when BRSR was taken into consideration that the top 100 companies should report upon the sustainability reporting. तो इंडिया ने पहले 100 के लिए किया, उसके बाद all 1000 listed companies, जो टॉप की 1000 listed companies है, now they have to do BRSR reporting. तो सेबी केम आउट विद देयर बीआरएसआर प्रोफाइल्स और बीआरएसआर का फ्रेमवर्क. तो वो फ्रेमवर्क इफ यू सी देन देयर आर 17 गोल्स. तो उसके लिए उसके कुछ फॉर्मेट है. वन पार्ट इज जनरल फॉर्मेट एंड अनदर पार्ट इज योर थीमेटिक एरिया फॉर्मेट. But it is like a checklist, yes or no kind of thing. You cannot do assessment. It is only for disclosure purpose. But I hope. this assessment, so M2I, they have developed this ESG assessment tool. Then as I know, this your rating agencies, they have developed their this ESG rating. So they do have their own tools, right? But it is Yes, based on the ESG parameters, correct. right? ESG parameters. So अगर अगर ऐसे देखें ना सर, कि जैसे एसडीजी की बात करते थे, तो वी टॉक अबाउट मोर अबाउट ना ट्रिपल बॉटम लाइन. Right, करेक्ट. right. अगर उसी एसडीजी के 17 गोल्स को इफ यू डिसाइड कि चलो ठीक है इसको बांटते हैं, तो यू विल फील कि सम ऑफ देम आर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सम ऑफ दोस 17 गोल्स आर सोशल एंड सम ऑफ दोस 17 गोल्स आर जी. तो ईएस जो एसडीजीज थे उन्हीं को ईएसजी में भी बांटा हुआ है और उन्हीं को पीपीपी में भी बांटा हुआ है. नाउ पीपीपी में भी वही है कि पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस चला जाता है, पीपल सोशल चला जाता है, प्लैनेट एनवायरनमेंट चला जाता है. तो सारे के सारे कंसेप्ट आपके निकल उसी एसडीजी से ही रहे हैं. Yeah, बिल्कुल, नाउ agree. करेक्ट. अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली डन एंड ब्रांड स्ट्रीट डीएनबी एक्चुअली Hmm, केम आउट विद. So what they have done, out of so many indicators, they have chosen 240 indicators. Out of hmm, those 240 indicators, 80 chosen from social, 80 chosen from environmental, and 80 chosen from governance side. अब hmm, हर इंडिकेटर का सर हम अपने मन से एक वेटेज दे सकते हैं. लाइक hmm, अगर हम माइक्रो फाइनेंस की बात करें, तो माइक्रो फाइनेंस विल गिव मोर वेटेज टू एनवायरमेंटल इंडिकेटर या फिर सोशल, तो शायद हमारा सोशल की तरफ ज्यादा जाएगा. सो मे बी hmm, 60% वेटेज टू ऑल 80 इंडिकेटर्स विच वी हैव सेलेक्टेड. बस यही वेटेज का जो गेम है सर, इससे ही हमारा असेसमेंट जो पैरामीटर है वो किसी और के असेसमेंट पैरामीटर से चेंज हो जाता है. इट इज जस्ट लाइक हमारे पास सिविल स्कोर भी है, हमारे पास क्रेडिट स्कोर के दूसरे एजेंसीज भी है. इट इज जस्ट लाइक hmm. दैट. How we choose, how we rate, how we give weightage, it depends, and it actually gives you a different leverage कि आप ज्यादा अच्छा क्या करते हो. So if you know, तो Indian अपनी जो SB सेबी है, सेबी came out with a news I think in July or August कि we will be having our own ESG parameters. ले भाई, सब लोग अपना अपना करेगा तो परेशान हो जाएगा तो. या फिर it is like नहीं सर. rating agencies that there are 4 5 rating agencies, you can pick and choose from this lot. Correct. So Okay. the whole problem is, if I want to give you in a crux, the whole problem is जो कार्बन क्रेडिट है उसको तो कहीं Hmm, बेचना है सर किसी को. hmm, तो hmm. कार्बन क्रेडिट का ऑथेंटिकेशन करेक्ट. Your voice is not coming. सर बीच में ना एक्चुअली कॉल वाज देयर, सो आई थिंक अच्छा, दैट ठीक है, no वाज. problem. Now we are getting you. Now we are getting you. Hmm, So I am saying everything is related with the carbon credit at some hmm, point in time, right? hmm, Now carbon credit ka assessment, carbon hmm, credit ka valuation is something which hmm, requires blockchain. Now hmm, blockchain was not available with the initial organization. hmm, So blockchain was not available. So those companies who started early and hmm. are not able to have na blockchain in place, क्योंकि Right. environment का assessment हुआ. With environment assessment, you will be able to report on your scope 1, 2, 3. As soon as you are able to report, it means either you have created more emission or you have reduced your emission. In any case, either you are in need of carbon credit or you are in surplus of carbon credit. तो अब इस कार्बन क्रेडिट के लिए जो मार्केट बनेगा बाहर जा करके, उसके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी इंडिया के पास नहीं है. हमारे पास सोशल स्टॉक एक्सचेंज बन गया, बट क्रेडिट का, कार्बन का एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है. तो सेबी इज द कंपनी विच इज गोइंग टू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. तो Hmm. बाद में किसी की भी चलेगी, बट जब जैसे ईयू टैक्सोनॉमी है, तो आपने देख सिमिलर दिया? थिंग विल कम फॉर अस.
which is like a green taxonomy. Which, मतलब we have already started. If you see, I think 18,000 crores के green bond थे, sovereign green bonds. वो पैसा गया कहाँ सर? तो वो इन्हीं सब चीजों में यूज होगा, ग्रीन बिल्डिंग्स में, ग्रीन फाइनेंस में. एंड यूरोपियन कंपनीज आर लुकिंग एट अस कि ठीक है उनका, बिकॉज इफ दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस देयर एमिशंस, दे हैव टू परचेज क्रेडिट. So from where that credit will come? And if credit is going to come from Indian companies, then who can create that credit? So social or environmental credit can only come from the financial institution. Well, it is one of the scope. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. तो इंडिया के पास अभी कुछ भी नहीं है. So it's because it is plain blank slate. That is why everybody is playing with their own rules. As That's soon true. as regulations are coming in, I think things will fall in place. Because if you read the history of it ना in 2008 or 7, उस समय भी यही सब हंगामा हुआ था सर. उस समय भी कार्बन क्रेडिट ये वो सब शुरू हुआ, बट बिकॉज ऑफ 2008 का लेमन ब्रदर्स, एवरीथिंग एक्चुअली फॉल बैक. So, Agya, how can we take it forward? Like, we do have many institutions, and how do we work together, like development of the parameters for the for your microfinance sector, and what could be the parameters if you present that one, and maybe a couple of these MFIs we can bring in and have a workshop, special workshop on ESG, ESG associated with microfinance institution, right, Sangeeta? So we can do that one and then we can take it forward. But my problem is that if we do have these rating agencies, they are already doing it. Where do we stand? Hmm. So most of the rating agencies are going to institutions with a promise that I will get you impact funds or I will get you climate funds. Okay. Okay. Correct? Mhm. Within the governance scope, if we are able to sell ourselves, Sadhan can easily sell that whether you are environmentally or socially Facilitated. sustainable organization. Yeah, Facilitate. Sadhan is not for profit. I understand. Sir, but Will you kill us or what? wording, wording. So Wordings, yes. my consulting hat is on right now. Yeah, please tell me. Yeah. So so if as a facilitator, if Sadhan says that whether your board members understand sustainability, I think one workshop is there. The second is, if impact investment or if climate investment or climate related sustainability related investment or bonds are coming in, how can we utilize it? Is there a market for that? Because low cost funding is available in these within these funds. So where will it come? Where will it go? So if impact investors are coming, so one place is that okay, let us create an impact fund or impact pool. But who is giving a guarantee whether you are impactful or not? So if Sadhan can come out with maybe a certification kind of thing, or a agency which can say that okay, if you go through this 40 hours of training, you and then uh, some sort of consulting plus training plus capacity building thing can be done, and we can give a certificate that yes, this is a sustainable organization or an impactful organization. Okay, this leads me to one question that do you have list of impact funds? Okay, that can be find out, sir. But then I So, don't have it right now, but it is there. I if like, actually I found out found out 10 10 which are which are operationally in operational India. in India. okay, लेकिन उसका लेकिन उसका आगे पीछे आगे कुछ पीछे पता कुछ नहीं, पता नहीं, कभी नहीं कभी सुना. नहीं सुना. Actually I Usually I try to try search to search in the in Google, the Google, कभी नहीं सुना. कभी नहीं सुना. क्वांटम कुछ क्वांटम कुछ एसबीआई के एसबीआई साथ के है, साथ है. कभी नहीं so सुना. what happens that if you can also give us a list, it would be good as well. Hmm. And you do have a consultancy company or what? Sir, again, मतलब I have a set of एक सेट है इंस्टीट्यूशन का विच इज एनजीओ काइंड ऑफ थिंग. तो कभी ट्रस्ट में पैसा लेना है तो उसमें ले लेते हैं. एक मेरा प्रोप्राइटरी जीएसटी नंबर है, सो इफ एनीथिंग इज बियॉन्ड 5 लाख रुपीज तो मैं उसमें लेता हूँ. अदरवाइज एज अ इंडिविजुअल. अच्छा, चलो एक दैट कंपनी दैट बनाते हैं.
पक्का पक्का So what we can do possibly, we can have a discussion with NABARD, and we will first what you do, you send us a small note. It maximum 1.5 page to 2 pages. Huh? You send us a note. The basic note will be that one, and we will start communication with NABARD. And once NABARD agrees with something, then we will bring you in as a consultant. You're ओके getting my point. That's how we work, you know. First we have to, क्योंकि हमारे पास तो fundraise करना पड़ता है ना. So राइट we do like that from our industry building side. So I will talk to NABARD, then we will bring you in, then we will have this workshop building them, because they see, if you don't work together, na, they also don't understand आई नो us. We also don't understand them. करेक्ट So करेक्ट association is very important. So working together. So you said that one with specific that what exactly we can do. One is your this definition of the parameters under NABARD's tutelage. Then maybe a workshop around it. Then maybe a pilot with 10 companies and whether it is. And then we will send a report to then we can, I mean, we will develop a report and send to NABARD, means funding agency. Then we can take it. If NABARD agrees with that ESG parameters, then we can brand it with Southern NABARD as a yeah. Then you can also, we will facilitate you to do all those things. So this is the business for you, and this is our work. Huh? So No, no, I mean, that's what we are. Sangeeta wants to हाँ tell something. तो आई तो हैव आई फ्यू हैव क्वेश्चन. फ्यू क्वेश्चंस. वो वो नाबार्ड का जो नाबार्ड का जो ग्रीन ग्रीन फाइनेंस फाइनेंस क्लाइमेट फंड क्लाइमेट है, फंड है, इट्स अ इट्स अ ह्यूज फंड. ह्यूज फंड. उसमें हम्म चार उसमें पांच चार 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 पैरामीटर्स, पैरामीटर्स, मतलब मतलब चार चार फंड्स है, फंड्स है, फोर वर्किंग काइंड्स फोर एरियाज ऑफ फंड. काइंड्स ऑफ फंड्स. तो हाँ उसमें तो से उसमें एक से एक साधन साधन कैन टेक कैन टेक लाइक लाइक फैसिलिटेशन एंड फैसिलिटेशन एंड ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग सब. और कैपेसिटी ये बिल्डिंग सब. वाला करेक्ट हाँ, करेक्ट हाँ. करेक्ट बट जहाँ पे बट जहाँ पे लैंडिंग की लैंडिंग बात की आती बात है, आती है, दैट फंड दैट वी फंड कैनॉट वी टेक. कैनॉट टेक. वो तो वो तो हम हम इनिशियली हम सोच इनिशियली रहे हम थे सोच कि रहे कोई थे कि कोई हमारे जो हमारे बिग जो बिग पार्टनर्स है, पार्टनर्स है एसएफबीज, एसएफबीज इस आप इस सोच रहे. आप सोच रहे. सो सो वी कैन वी हैव कैन देम हैव मैम सो देम दैट उसके सो दे लिए दैट कैन. दे कैन. नहीं नहीं सर उसके लिए इफ यू हैव दैट मतलब आई डू नॉट नो एग्जैक्टली लीगैलिटी ऑफ दैट बट इंडिया में सर ना कोई अभी एसपीवी या एसपीवी नहीं है स्पेशल पर्पस व्हीकल यस टाइप का नहीं यस. है जहां पर हम फंड्स को डाल सके एंड देन वो एक उसको हम लोग बोलते हैं सैंड बॉक्स मॉडल. तो सैंड बॉक्स मॉडल यहाँ पर बहुत अच्छा बनाया जा सकता है कि यस. एनी यस. कंपनी लाइक मुफिन फाइनेंस. मुफिन ने अभी बहुत सारे ग्रीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना शुरू किया एंड दे आर एबल टू रेज गुड अमाउंट ऑफ फंड्स. बट अगर सैंडबॉक्स मॉडल में उसको देखें नई फिनटेक कंपनीज के लिए विच वांट टू वर्क इन सस्टेनेबल वैल्यू चेन या सस्टेनेबल सप्लाई चेन तो इंडिया फिनटेक में ना. किसके फिनटेक साथ ना. काम करें. यस. हाँ So that's why I was asking you that if you do have a couple of this impact fund who are interested, or like impact fund making them interested is our work also. So if you can give us like couple of like 7, 8, 10 names, then also if you have the contact, then it would be good to take it forward. That we will also simultaneously talking with them. एंड द एंड द ठीक सेकंड है सर. थिंग सेकंड इज थिंग इज ये जो ये सेबी जो सेबी रेगुलेशन है, रेगुलेशन, दैट इज दैट वन हम्म इज वन सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट. एंड द एंड थर्ड द इज थर्ड ये जो इज ये जो क्रिसिल क्रिसिल जो जो क्रेडिट ब्यूरोस क्रेडिट है, ब्यूरोस है, ये हाँ कहाँ ये से कहाँ फंड से लेके. फंड वो लेंगे. क्रिसिल क्रेडिट ब्यूरो नहीं है, इट्स अ रेटिंग हाँ, एजेंसी. रेटिंग एजेंसी. रेटिंग सो एजेंसी. सो हम्म क्रिसिल रिपोर्ट क्रिसिल मैंने रिपोर्ट देखा है मैंने कि देखा है कि वो ईएसजी वो रिपोर्ट ईएसजी कहीं रिपोर्ट देता कहीं है. देता है. बट ये हम्म बट कैसे ये प्रॉमिस कैसे प्रॉमिस कर कर सकते हैं सकते कि हैं कि इम्पैक्ट फंड ले इम्पैक्ट आएंगे. फंड ले आएंगे. मैम प्रॉमिस ये नहीं करते हैं एक्चुअली क्या है ना जितने भी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस है फॉर एग्जांपल अभी मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ. हाँ, आई एम हेल्पिंग देम आउट इन ईएसजी प्रोफाइलिंग ऑफ कंट्रीज इन ईस्टर्न यूरोप. हाँ, राइट. अभी वो क्या करते हैं उनके पास फ्रांस का पेंशन फंड उनके पास है. हम्म, फ्रांस का पेंशन फंड विच इज नॉट यील्डिंग 0.5%. वो Right. पेंशन फंड अपने पास लिया. हम्म, अपने पास लेकर के अपना एक रेटिंग टूल बनाया. रेटिंग टूल से हम आपके साथ रेटिंग कर रहे हैं उसका एक फीस हम ले रहे हैं. हम्म, इस
इन्वेस्टमेंट कंपनी को व्हेन दे फील कि हाँ नाउ दिस इज ए प्लस और इट इज इन्वेस्टेबल, वो पैसा हेज फंड के थ्रू डाल करके यहाँ पे डाल दिया। नाउ 6% उसका कॉस्ट है हेजिंग का, 6% वो यहाँ पे लेता है, 12% हुआ टोटल में, और 3% का सर वो ले रहे हैं अपना प्रोविजन फॉर लॉस। इसके बाद भी इंडिया में जब पैसा आ रहा है सर, वो तो 10 से 12% पे ही आ रहा है ना, और 10-12% इज गुड इनफ अमाउंट ऑफ वेरी मनी गुड यहाँ enough, पे। very good. हाँ, यहाँ पे Very अच्छे good. से गेम खेलने के लिए, बिकॉज हाँ एट द टाइम व्हेन दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम हियर दे विल शो इन जर्मनी या फ्रांस कि भाई दिस मच अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम दिस फंड, so the impact is now getting quantified, and once we are able to quantify that, now so that is the reason why now in EU from July 2024 companies who are doing ESG reporting, they have to share their formats, they have to share their frameworks, weightage, everything. If they are not going to share, then they will be scrapped, because greenwashing is now coming in. तो अब उस ग्रीन वॉशिंग में, ब्लू वॉशिंग में, नोबडी नोज आपने वो पैरामीटर क्यों कम किया, आपने नेक्स्ट ईयर पैरामीटर क्यों बढ़ा दिया, बिकॉज ऑल दिस इज अबाउट ना माय विम्स एंड फैंसीज की मुझे ये कम लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसका रिटर्न बढ़ा सकते हैं, सो लेट मी इंक्रीज दिस। हाँ, ओके। So तो let us, I mean, it's a good हाँ, that नहीं ये we उस are सभी रेगुलेशन में पड़ जाएगा ना, पड़ हम जाएगा जो ना, भी हम सोच जो रहे भी हैं, सोच रहे हैं, whatever whatever concept no we concept are no we are thinking, thinking, हमारा maybe बेसिकली we can also bring SEBI in that meeting, NABARD, SEBI, couple of this institution, you, Sadhan, everyone, and we can have a kind of interaction, introductory interaction. Then we will take it forward as we are we are planning to send it to NABARD, get some funding for the activities. Activities are what developer tool. Activities are what that doing some pilot activities, what they're doing some reporting on it. Then also activity 4 is like activity 4 is in the third year, that it is not very this thing, but we will also try to bring, don't write, we will try to bring that this impact funder. And activity between you and us is send us this impact funds details. And also, this we are having a this lenders meet, lenders bankers and MFI meet, and when doing it in January, 17th, 18th January or something. So we can also Okay. bring you as a kind of consultant for giving a small piece of lecture on that ESG and how can it impact all those things. So we will bring that impact funders also, we will bring the banks also, will bring Got it. the investors A also, good and make it platform. a good Right. platform. And last year we got around 200 participants. So it is increasing. This Wonderful. year there is this year. Wonderful. So it is. Wonderful. ठीक है सर, ठीक है? sounds good. Yep. So when can we get it? नोट कब? note का तो Note. नोट सर मेरे आने तक हो जाएगा सर। आई विल बी लीविंग दिस प्लेस टुमारो इवनिंग, आई विल बी रीचिंग यू इन दिल्ली ऑन 9th, तो 9th से पहले हो जाएगा। ठीक है. Thank you. Looking forward. Chalo, let us take it forward. Right. Okay. Right, It right. took us a bit of time to work together, but it's working now. Thank you for being there. Bye. Have a good day. Yeah, bye bye. Bye. इसका 2 जाएगा, तुम यहाँ पर बैठो, बैठ के सबको भेज के जाओ। इसका क्या नाम है तुम्हारा? मेरे पास तो एक ही म्यांमार का था ना, वो और कौन? पीओ नहीं आ रहा है। पीओ को सीसी होगा। रितु पार्टनर से 2 जो ईमेल आईडीज है उसका नाम, जस्ट बाकी सब ईमेल आईडी मेरे पास है, किसका? पीओ का? मतलब ये जो स्पीकर्स है उसका उसने भेजा है ना, ना ये तो नया है। मैं इसमें तो पीओ है भी नहीं, स्पीकर्स। ना, ये तो बाद में मेरा फ्रेंड ने मुझे ये करवाई। तो पीओ को अभी नहीं भेजूं ये मेल? पीओ को ये करना। पीओ हैज टू बी सीसी। हाँ। ओके, एक मिनट, And मेल में जाती हूँ। I'm sending you the person.
पीओ को तो भेज दिया ना वन वॉयज। हाँ लेकिन वो नहीं आ रहा। तुम ऋतुपर्णा से दो जो म्यांमार में हम लोग भेजे अभी, उसका पीओ नहीं आएगा, पीओ का दो बोर्ड मेंबर आएगा। कब भेजे? वो तुम मार्क नहीं हो, तो मैं एक ऋतुपर्णा को बोलो वो लेटर भेज देने के लिए, जो इन्विटेशन लेटर गया पीओ विल बी इन सीसी ना, एट लीस्ट टू म्यांमार बोर्ड मेंबर